हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के केस लॉज रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ द कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल टू डिटरमाइन द डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सलोमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी जॉनसन वर्सेस कैनेडी, ऑप्शन सी मूर्स वर्सेस ब्रूक, ऑप्शन डी यंग वर्सेस हिटचिंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Supreme Court of India in A.K. Gopalan versus State of Madras decided the expression procedure established by law in Article 21 of the Constitution means any procedure prescribed by law irrespective of its reasonableness or otherwise. This decision belongs to the school of A. Positivist approach, B. Neutralist approach, C. Historical approach और D. Sociological approach। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अभी कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर है A. Positivist approach। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Persons in possession of an object has better title over it against the whole world except the real owner. This principle has been illustrated in which one of the following cases? Options are option A. Armory versus Delamere, option B. Bridges versus Hawkinsworth, option C. R versus Moore, option D. Ray Cohen's case। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्मरी वर्सेस डेलामेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच it refused to accept its earlier decision and overruled its own precedents was option A. Keshav Mills Company versus Income Tax Commissioner, option B. Bengal Immunity Company versus State of Bihar, option C. Maneka Gandhi versus Union of India and option D. Kharak Singh versus State of Uttar Pradesh। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following cases does not relate to possession? Option A. Bridges versus Hawkinsworth, R versus Moore, option C. London Street Tramways Company versus LCC and option D. Tower and Company Limited versus Gray। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी वर्सेस LCC। सिक्स्थ क्वेश्चन, the theory of lifting the veil of corporate personality was evolved in Mary versus Green, option B. Salman versus Solomon, option C. In Ray Cohen and option D. Ancon versus Rosers। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा ऑप्शन बी सैलमन वर्सेस सैलमन। क्वेश्चन नंबर 7, in which of the following cases the jurisprudential basis of the principle to award compensation for violating human rights has been laid down by the Supreme Court? Options are A. Konda Reddy versus State, B. Ratlam Municipality versus Vardi Chand, C. Vishaka versus State of Rajasthan, D. Neelabati Behra versus State of Orissa। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीलाबाटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 8, select the correct answer using the code given below on the following decided cases about possession। तो possession related कौन से केस में हेल्ड किया था? फर्स्ट कार्टराइट वर्सेस ग्रीन, सेकंड आर वर्सेस हडसन, थर्ड दलमायर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो इन कोड्स में कौन से केसेस में हेल्ड किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्टराइट वर्सेस ग्रीन एंड आर वर्सेस हडसन। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following cases was it observed by the Supreme Court that President should not be petrified nor judicial dicta divorced from the socio-economic modes of the age? Option A. Mamleshwar versus Kanhaiya Lal, option B. Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar, option C. State of West Bengal versus Corporation of Calcutta, option D. KC Dora versus Annamanaidu।
So the answer is option B, Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar. Question number 10. The House of Lords upheld the Attorney General's political discretion in refusing to invoke the law in face of a threatened criminal offence in deliberate defence of an Act of Parliament in the case of options. Option A, Urate versus Union of Post Office Workers. Option B, Francom versus Mirror Group Newspaper Limited. Option C, R versus Bonnet. And option D, Johnson versus Phillips. So the correct answer is option A, Urate versus Union of Post Office Workers. Question number 11. Modern doctrine of bindingness of precedents was first laid down in option A, London Transways Company versus LCC. Option B, Young versus Bristol Aeroplane Company Limited. Option C, Meyerhouse versus Renell. And option D, Syros versus Moore. So the correct answer is option C, Meyerhouse versus Renell. Question number 12. In which case it was held that a bundle of notes found on the floor of a shop passed into the possession of the finder? So इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आर वर्सेस रिले, ऑप्शन बी आर्मरी वर्सेस डेलामायर, ऑप्शन सी हैना वर्सेस पील एंड ऑप्शन डी एनकोना वर्सेस रॉजर्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्मरी वर्सेस डेलामायर. Question number 13. Bridges versus Hawkesworth is a popular case on A, ownership, B, possession, C, transfer of ownership, D, atonement. इसका सही आंसर है B, possession. Question number 15. Law is a social engineering to remove the existing imbalance and to further the progress serving the needs of the socialist democratic Bharat under the rule of law. This was the observation of Justice K. Ramaswamy in. Options are option A, Delhi Transport Corporation versus DTC Mazdoor Congress. Option B, Indira Sahni versus Union of India. Option C, State of Karnataka versus Appa Balu Ingle. Option D, Paramanand Kataria versus Union of India. So इसका सही आंसर है ऑप्शन A, Delhi Transport Corporation versus DTC मजदूर कांग्रेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल. थैंक यू वेरी मच.